ठीक है नमस्कार। नहीं नहीं आगे में वीडियो होगी और किचन दो है। हाँ 3:45। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ऐसा यहाँ तो ठीक ठीक ठीक। बड़ा उधर उधर शिफ्ट होते हैं पहले हम लोग इंडस्ट्री। ठीक तो हम कर लेते हैं, शिफ्ट करते हैं, नेहा में गेट कर लेते हैं। हाँ हाँ। वीडियो देख लेते हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं देखिए मतलब आना है वो एकदम से कन्वर्ट करना है। हेलो जी। नहीं नहीं, मैंने आपको पैनलिस्ट वाला लिंक जो भेजा है ना मैडम, वो लंबा सा लिंक है जो मैं आप मेल पे भेजा है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं क्या? जी जी। चलो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं वो। हाँ ठीक है ना, चार उतने हैं। A very warm welcome to everyone and welcome to the National International Webinar Series #Modern Talk. Today we are going to have with us Dr. Divya Gupta. She is a gynecologist as well as she is the founder of an NGO, Jwala.
Namaskar. Hi. Hello. Hi, Namaskar. How are you? I'm good, ma'am. How are you? All good. Can you hear me well? Yeah, yeah. Perfect. A very good afternoon to everyone and welcome to the National International Webinar Series hashtag Modern Talk. And today we are going to have with us Dr. Divya Gupta, founder of Jwala, a gynecologist, a socially and politically active lady, and a very inspirational and motivational speaker. And we also have with us our group director, Dr. Puneet Kumar Dwivedi. So, very warm welcome, ma'am. On behalf of Thank you. entire Modern family, I welcome you to the National International Thank you. Webinar Series hashtag Modern Talk. Now, before moving further, I would like to give a brief introduction about our organization as well as this program is live on Facebook. So, I will take a minute to make it live. So before moving further, I would like to give a brief introduction about our organization. I hope my screen is visible now. Modern Group of Institutes, leading group of premier institute affiliated to RGTV Bhopal, JVB Indore and CBSE New Delhi. We are approved by AICT New Delhi, NCT and PCI New Delhi. Modern Group is imparting quality education in the field of pharmacy, management, commerce and education. We offer more than 8 courses in this field, which includes B Pharma, M Pharma, BBA, BCom, B.Ed, and MBA. Modern Group encompasses two leading pharmaceutical industries, Modern Lab and Nandini Medical Laboratories Private Limited. Modern Laboratories was established in 1979 by late Shri P.C. Khariaji, and Nandini Medical Laboratories was established in 1998. Both gained prestigious acclamation in All India rating of pharma industries. We also have Modern International School, established in 2013. We believe in innovation and entrepreneurship, and hence we introduce MP's first pharma incubation,
Modern Incubation Center in the year 2019, sponsored by MSME Government of India. Recently, we have received World Book of Record UK and World Record Academy USA for making largest human image of medication capsule. We are also recognizing participating institute of Unnat Bharat Abhiyan in association with IIT Delhi and MHRD Government of India. We also have the institute also have Modern Innovation Council, which is an institution innovation cell by MHRD Innovation Cell. In the pandemic period, we have started this webinar series hashtag Modern Talk, and probably we have done 45 webinars in this row, and in the month of June and July. So now moving further, I would like our director, group director, Dr. Puneet Kumar Devi, to welcome our guest. Thank you, ma'am. Namaste, ma'am. So really, it is matter of pride to have with us today Dr. Divya Gupta ji, very renowned person or personality in the ecosystem, social ecosystem, political ecosystem, and the Jwala name that we have seen, and very well known self-help group by females or women-driven self-help group. Madam is leading, and with her initiatives, we are seeing how Indore is doing great, and females are getting empowered by Madam's this initiative, the Jwala. Again, it is a matter of pride to welcome Madam and hashtag Modern Talk, that is National Webinar Series by Modern Group of Institutions. On behalf of our Chairman, Shri Anil Kharia ji, Vice Chairman, Shri Shantanu Kharia ji, and on behalf of Modern Group of Institutions, I feel pride to welcome Dr. Divya Gupta ji, founder Jwala, the self-help group, in this national webinar series, hashtag Modern Talk. Thank you so much, ma'am. Thanks for accepting our invite. Thank you, ma'am. Thank you so much. My pleasure. Entirely my pleasure. Thank you so much, Puneet ji. Thank you so much, Arpita ma'am. We have known each other since a long time, and it's a great opportunity to connect to you and to your team once again. I'm very happy to have to be a part of this webinar, and I feel honored that you have invited me here. It's a matter of pride for me too. So thank you so much once again. Thank you so much, ma'am. Now, before moving further, I would like to give a brief introduction, because if I give introduction of Divya ma'am, it will take a session to Oh, please no, please no. I get so embarrassed. I get so embarrassed. Don't do that. Let's go straight away. No, I would like to give a brief introduction about you, about the guest. So for that, I need to share the screen. I hope my screen is visible. Dr. Divya Gupta is a senior gynecologist serving patients in Central India since the last 3 decades with an active interest in social and political issues. She is passionate about the cause of women, committed for the upliftment, empowerment of women. It's her dream to make girls of our nation educated, confident, and self-reliant. Her NGO Jwala is a voice of today's women. She comes from a family of strong values and devotion of Mother India. She is a proud Indian who strives for a better and stronger India. She is ready to serve to the nation and deliver the results. She is a BJP MP State Working Committee member. She is also media and English channel BJP's MP spokesperson. She is BJP MP Foreign Affairs Team, in charge of Foreign Affairs Department, BJP National Foreign Affairs Team, and a member of that committee. She has also a public forum, and she is regularly writing articles in popular Hindi on topic of parenting to women, pertaining to women health. She is a columnist in a DNA newspaper Indore column by name Heart Talks. The column highlights social issues, and she has also spoke on many more platforms. She is very active in politically. She is also very active, and she has been a part of many activities like National Seminar 2018, One Nation, One Election. She has given a lecture with the participants of PGP at Rambhau Mahagil Prabodhini, placed in Mumbai. She is the Bharatiya Janata Party Madhya Pradesh Rajya Stariya Vistarak Baithak. She has attended the meeting, and she has many more awards too in her account, which includes Devi Ahilya Nari Gaurav Alankaran 2014, Top 50 Indore Influencer 2013, Women of Substance 2012,
and to name a few. So on behalf of entire Modern family, I feel honored to welcome you, ma'am, to this National International Webinar Series, #Modern Talk. Thank you so much, Arpita ma'am. It seems like a huge old journey. So please don't do that. I really get very embarrassed. Now, I would like you to start the introductory talk on today's topic. So thank you so much once again for inviting me over to this wonderful webinar series. I've been a part of these. I've been looking on and off at all the wonderful topics that you have covered so far. And Puneet sir is so active that his dynamicity always touches you and makes you vibrant once again. So thank you again. Once being a part of this is a pride for me. Now, my journey of Jwala is something that I would like to describe as a spur of a moment decision. You know, there are certain things that happen to your life. Though you have something kind of a feeling inside you that you must do something for the society. It's time that I want to change my profession. It's time that I want to do something, give it back. But we really don't know how to start, when to start, where to start, what would be our roadmap. So there's always a tipping point. You know, there's a famous book which says that what is that turning point in your life that makes you take that decision and then you go ahead and then you move ahead in your life. So I'd been a gynecologist, a different gynecologist only because of the fact that all these patients so far in my life, they're my family and I was a part of their family. So a different doctor because my USP was not just my medicine, but the part that I used to be touching their lives. Even if they had a decision to make about the child, which school needs to be admitted, mother-in-law की क्या problem है, और family issues कैसे deal करने हैं. So I was a integral part of all that. So socially, I've been touching people's lives for a very, very long time. But somehow this was a matter which was very close to my heart. And that was when I started teaching Garbh Sanskar. Something different from the typical gynecologist profession. And Garbh Sanskar is again a very age-old tradition, Indian old tradition. It is derived from Rig Ved. Rig Ved is about 5,000 years old. And Rig Ved says that there is an entire science behind how the child needs to be nurtured when in womb. So I keep saying that in all my lectures, that the education doesn't start from once the child goes to school. The education starts when the child is in the womb. So your fetal schooling is what Garbh Sanskar is all about. And we need to take care of that, because if we want a good society, we need to have a good child that is born to a wonderful mother. And pregnancy is a beautiful journey. I think all who have gone through the pregnancy, all wonderful women, they know how beautiful the journey is. So that was how I was touching lives then when I was a gynecologist. I still am. I still practice. And I'm still into that giving birth to children, beautiful lives coming into my hands first. And then one fine day, something happened that changed my life. And I said that, okay, I need to do something for the girls. So there was a girl in Assam, and she was molested on the middle of the road. Some MMS was made, and then it was made viral. I said, this is enough. We need to stand up and do something. So I called up everybody in my phone book, and then I started calling, and then we organized a candle march. So, okay, from Gandhi Hall to Gandhi statue, the typical way, a silent but very effective candle march, because we were about 500 people. So it was a very well attended march. And by the time that I would organize myself and I would start thinking that, okay, let's do something about this particular subject, Nirbhaya happened. And that changed the entire scenario of the country. The country suddenly became very alive to the problem. So there was another candle march. But finally, I started thinking that these candle marches are not the answers to these to this very rampant problem. So what could be the answer? So my tagline always says that ab candle march nahi hoga, ab sandal march hoga. So we started teaching self-defense to girls from school to school, college to college, wherever, whatever. 50 लड़कियां हो, 500 लड़कियां हो, 1000 हो, कुछ भी हो, we would do it. And it was all free of cost.
and we started teaching. और अब तक हमारी जर्नी में we've reached out to more than 2 lakh girls teaching self-defense. So that is how Jwala was born, and the name itself says fire. So Jwala is the angry form of fire. You know, Jyoti nahi hai. We are not a small Jyoti. We are not a small Chingari. We are Jwala, the angry form, प्रज्वलित form of fire. तो ये जो एंगर था, ये एंगर हमारे नाम में भी झलकता है और हमारे काम में भी झलकता है. तो इस एंगर के साथ हम लोग लेकर आगे चले. And then the journey began by teaching self-defense. One fine day I decided that why am I talking to girls alone? If I want to change the society, then I need to be talking to the boys. Because the problem, actually, I'm sorry to say, the problem lies on the other side of the fence. So why am I not addressing that problem? So we designed a module called Main Rakshak. So Main Rakshak is a module for boys and men. And जो रक्षक है वो भक्षक नहीं बनेगा. That was the tagline again. तो हमने उनके लिए एक मॉड्यूल तैयार करा. Unfortunately, they are not much buyers for that module. Only because I'm again sorry to say that men think that okay, मेरे में problem नहीं है, मुझे क्या दिक्कत है. But I always say that अगर समाज को बदलना है तो अब high time that men take this model forward, because उनको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के कारण पूरे के पूरी जनजाति जो है वो बदनाम हो रही है. तो उनको कहीं ना कहीं अब आगे आके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. So it's high time that they take the torch forward and bring about the change in society. And that program was very well appreciated then when the first time we organized this program. So we had an attendance of about 3,000 people. Municipal corporation के, collectorate के बहुत सारे लोगों ने participate करा. जुगनू rickshaw drivers were the ones. AICTL drivers, conductors, cleaners were ones. So UN ने बहुत अच्छा उसको accept करा, because UN also takes one module which says he for she campaign. So he for she का हमारे को certificate मिला और वो बहुत सारा आगे करा. Again, as I said, we need more manpower. किसी भी organization को चलाने के लिए, well, you have questions. किसी भी organization को चलाने के लिए पैसा एक बहुत बड़ी चीज होती है, और वो पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और जिसके कारण बहुत सारी अच्छे आइडियाज और विचार आते हैं लेकिन वो आगे नहीं जाते क्योंकि पैसा नहीं है. So we'll come to that later on. My third program is जहाँ से आज आप लोगों ने मुझे बुलाया है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, where we decided that women जब तक financially empower नहीं होगी तब तक वो empowered नहीं कहलाएगी. So the financial empowerment is the crux to any empowerment. So I started working with the urban slum unskilled women. So I use 4 keywords here: urban, slum, unskilled, and women. So 4 keywords. So these are these women who are sitting at home doing practically nothing all day long, and they are not allowed to go out of the house because they are not supposed to work because of so-called इज्जत खराब हो जाती है. And उनके पास फिर भी पैसा नहीं होता क्योंकि हस्बैंड जितना पैसा लाके देगा उनके हाथ फैलाने पड़ेंगे पैसा मांगने के लिए. चाहे वो रात को मारे, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो पैसा छुपा के रखे तो चीनी के डब्बे में छुपाया हुआ है या चावल के डब्बे में पैसा छुपाया हुआ है, पर वो हस्बैंड वो भी ले जाता था. इन महिलाओं का इलाज नहीं होता था, इनका बहुत कुछ, आप अनंत समस्याएं जो आप समझ सकते हैं. So there was a project which came to my mind which said that घरों में सबके न्यूज़पेपर्स आते हैं और हम सब रद्दी में बेचते हैं उनको फाइनली, और रद्दी वाला हमको मोल भाव करके उसके सड़ा सा एक भाव देता है और वो देख के हम कुछ 100-200 रुपए वापस अपनी जेब में डाल देते हैं. वो 200 रुपए हमारे किसी काम के नहीं है. लेकिन अगर मैं ये न्यूज़पेपर से किसी महिला को ट्रेन करके न्यूज़पेपर बैग अगर बनवा लेती हूँ तो ये वाले बैग बाजार में मार्केट में वापस आएंगे. इनसे हम पॉली बैग्स को रिप्लेस करेंगे और हम एक रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, इस तरह का पूरा एक मॉडल तैयार कर लेंगे. सो विद वन न्यूज़पेपर बैग आई वाज अचीविंग द टारगेट ऑफ रीयूजिंग द न्यूज़पेपर दैट वाज देयर, recycling because it was a perfect recyclable model, and of course reducing because poly bags were being reduced, but at the same time also empowering these urban slum unskilled women to achieve a few pennies or rupees, whatever they could earn. I started off with 3 women क्योंकि मेरे आसपास जो 3 औरतें मुझे थी उनसे मैंने पहले प्रैक्टिस करा, बनाना शुरू करा. बहुत सारे पेपर बर्बाद हुए और हमने बेचने की कोशिश करी. आप विश्वास करेंगे, मैं अच्छे नामों को जानती हूँ यहाँ पर जिन्होंने हमें धक्के मार के बाहर निकाला और ये कहा कि ये क्या अगली लुकिंग बैग्स लेकर आए और ये हमको नहीं यूज कर रहे हैं.
Then I fought for them because I said कि ये brown paper bags जो आप use कर रहे हैं ये भी virgin paper का bag है. A virgin paper, that means it has not been used, so it's a virgin paper. And एक brown paper bag को बनाने के लिए आपको 5 पेड़ काटने पड़ रहे हैं. क्या आपने अपने जीवन में 5 पेड़ लगाने के बाद उनको बढ़ते हुए देखा है? पौधारोपण बहुत सारे लोग कर लेते हैं, वृक्षारोपण करके फोटो खिंचा के वापस आ जाते हैं, but does it really become a tree? No. So practically we have not done anything to the environment. On the contrary, we are taking everything away from it. And again, we are not we're trying to be very savvy, saying taking a brown paper bag and writing save trees on it. So I'm sorry, that doesn't achieve the purpose. In fact, that's pretty foolish. So पर धीरे धीरे ये movement start हुआ, लोगों ने किसी एक ने accept करना शुरू करा. So I will thank Shrimaya because Shrimaya is one organization जिन्होंने हमें left, right and center support करा है, and it is only because of them that we have come to this. So starting from 3 women, we are a family of more than 500 women now who are making newspaper bags. On and off, I'll just say that not at all given point of time, not all 500 are active. So I'll be very honest with you. क्योंकि महिलाओं की अपनी बहुत सारी समस्याएं होती, कभी किसी को ससुराल में जाना पड़ गया, कभी आज ये बीमार पड़ गया, कभी ऐसा हो गया, you can understand. So at any given point of time, probably about 150 to 200, but we have an honest database of 500 women who are working with us on and off. कभी कभी कोई घूमती हुई चली आती है. And at these trying times, then every day probably we get 2 or 3 other people who walk up to the center and say कि क्या यहाँ काम मिलता है. So we say यहाँ काम मिलता है, सम्मान से यहाँ काम मिलता है. अब वो महिला 2,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए महीना तक एक पेपर बैग बना के कमाती है, which is a huge number for that woman who's sitting at home, who does not have any education, who's unskilled. अब वो अपना इलाज खुद करवा रही है, अपनी बच्ची की एजुकेशन खुद कर रही है, उसने अपना जो गिरवी रखा हुआ मंगलसूत्र था वो निकाल लिया है, और इस तरह की अनेक चीजें वो उसने अचीव कर ली हैं और वो एम्पावर्ड हो गई है. अब हम सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं, अब हम कपड़े के थैले भी बना रहे हैं, जूट के भी बना रहे हैं, और बहुत अनेक आइटम्स बनाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. कोई ढूंढता सूंघता हमको चला आता है और फिर अपना कुछ एक ऑर्डर दे देता है. अभी हम लोगों ने इस कोविड पैंडेमिक को पहले से ही पहचानना शुरू कर दिया था. अगेन बीइंग अ डॉक्टर, probably I understood that we'll be needing masks a lot. So my first message to everybody to buy a cloth mask, because I was always a propagand of the fact that this N95 masks are useless. We are not supposed to use them. And this non-woven के जो mask मिल रहे हैं, which are furthermore garbage, इनको भी use नहीं करना चाहिए. तब मैंने पहला मेरा मैसेज मार्च 16 का गया हुआ है, जब मैंने सबको बोला कि आप क्लॉथ मास्क यूज करिए. So in all this lockdown period when everybody else's business was down, our business was flourishing because we were making masks left, right and center. So our women have been very happy and the journey so far is continuing. So thank you so much. This was a small brief to my journey. Mike, I'm happy to answer all your questions now. Thank you so much, ma'am. It was a wonderful journey, and your journey definitely is going to motivate the participants. Right now, we have 113 participants with us, those who are Wow. listening to you. And Wow. मेरे पास शब्द कम पड़ गए मैडम अब आपसे बात करने नहीं मैम. तो मैं इतना ज्यादा आपकी स्टोरी को, मोटिवेशन को मतलब इस तरह से ले रही थी कि मेरे गूज़बम्स आ गए और मैं मतलब बोलने में भी मुझे ऐसा आई एम शिवरिंग लिटरली. You have to, thank you so much. You have to come and see and meet these women because आप जब इनसे मिलते हो और इनकी जब बातें सुनते हो, मुझे भी नहीं पता होता कितनी बार ऐसी महिलाएं हैं जो आके बोलती हैं कि मेरा I lost my husband, I was sitting at home, I had nothing to do, nobody was respecting me, and then suddenly somebody told me यहाँ जाओ, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा काम मिलेगा. अब वो महिला आती है और वो अपने 5,000 रुपए कमाती है. And she says 5,000 rupees, my own money. It's amazing. So that confidence that she has now, and I'm happy I could be an instrument to provide all this to these women. Now we have medical camps for them. We have every kind of. Once you have a database, probably, and once you have a center, then you can organize whatever you want. Yeah. So offshoot programs. There are a lot of offshoot programs also that are going on. So yeah. Thank you so much, ma'am, for sharing your experiences. Now moving further to the question answer round, my first question, which will I think every participants have in their mind, that
doctor or gynecologist is totally a different profession, and then into the political as well as the social activities. So how come this combination, rare combination, happened? Yeah. So I'll just say that gynecologist, of course, that was my first profession and still is my profession. I still am practicing. Though, of course, my practice gets a little affected because of my other activities as well. But I have done enough. I think I have had a very good practice in my life so far. एक दिन में 10-10 डिलीवरियां भी करवाई हैं तो वो भी हुआ है, तो वो भी फेस देखा है. So that's also something that I went through and very well. And then, as I said, that there is a tipping point when you just turn your life the other way around. Politically, yes, I am very active is only because of the fact that I have a political lineage. This comes because of my father, and because he was connected to all these people. And then, of course, I took the march forward. And so far, God has been very kind, because all these people, they still shower their love on me. And if I don't call them up, somebody other will call me and ask me, कैसी हो, इतने दिनों से फोन नहीं आया, ठीक हो, कोविड के दौरान भी ठीक हो, सब चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है. So yes, this goes on. As I said, I maintain a very God has been kind to me. That's all. That's all I can say. Jwala was, as I said, came as just as a spur of my opportunity that just came forward, and there was no decided roadmap. Nothing that कि अच्छा इसके बाद ऐसा और इसके बाद ऐसा और इसके बाद. There was no planning. Everything was random because it just came to my mind and it just happened. That is probably a reason why this struggle is more. And let me just tell you one more thing. Till date, in spite of whatever political pictures आपने जितनी दिखा दी हो, उन सारी पिक्चर्स के बावजूद मैंने आज दिन तक कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ में एक पैसा किसी गवर्नमेंट का नहीं है. This organization for the past 8 years is going on without any government support. So it is all just self-sufficient kind of a thing that is going on. And the struggle is, of course, is very, very hard. Very, very hard. Yeah, it seems so, ma'am. It seems from your, the speech, we can, sense that how much struggle you have done in your for making Jwala as a Jwala, real Jwala. Yeah, it is. It really is. But I'm so happy. You have to come and see the center, because I don't take any decisions here except for the fact that I guide them. These girls who have been here in the center, who run the center, we are a staff of 20 here now, and at the center itself. And you have to see the confidence, how they manage, how they deal, how they talk to people, costing, pricing, selling, whatever. They're the ones who take all the decision. And if I suppose say something, they said, "Madam, aap ek kinare baith do. Ab humko kar le do." It is like a leader, like the employees or the. It's wonderful. It's really wonderful. Yeah. So, Tell me. One question. It came from the participant side. Dr. Dheeraj Kaushik. He has asked that, do you provide any kind of education or training to these females? Yes. So thing is that, as I said, offshoot programs also go on. So there are other things also besides that going on. So there are now few girls who are like 12, जो 12th तक educated थी. And then we said that okay, नहीं आपको college भी करना है. तो अब मैंने उनको private college के लिए, because they said that हम आप college नहीं जा सकेंगे, so private college के लिए encourage करके उनकी सारी सुविधाएं provide करना, ताकि उनको डिग्री मिल जाए. तो ऐसी अभी 5 मुझे तैयार हुई हैं, जो 5 अभी पढ़ाई में, आगे की पढ़ाई में लगी हुई हैं. Unfortunately, what I have noticed in this particular kind of environment is that they are not very inclined to education. There are very few. जो होती हैं वो निकल जाती हैं, पर जो नहीं जा रही हैं वो ठस हैं, वो जाना भी नहीं चाहती. तो उनको मैं जो मर्जी समझा लूं. But then I train them for other vocational education. कि कम से कम सिलाई कर लोगी, कम से कम ब्लॉक प्रिंटिंग में तुमको सिखा दूंगी, कम से कम कुछ और कर दूंगी, तो तुम कुछ अपना पैसा कमा सकोगी. But then they are happy doing that. So sometime or the other I feel that okay, whatever makes them comfortable, at least I should give them empowerment, whatever, however I can. That is the main purpose. इनके बच्चों की education के बारे में हम लोग definitely बहुत सारा काम कर रहे हैं. So computer education देना है, story telling activities करनी है, gaming activities करनी है, वो इनके बच्चों के साथ करते हैं. So that career counseling करनी है. That kind of thing is also going on now. Did I answer the question well? I hope. Yes. Yeah. I think Mr. Kaushik has received the answer very well.
Yeah. And He says that's very nice. yes. Yeah. You can see the chat box it is full of Yeah, I compliments and can. it is a Yeah, it's motivational flashing. Yeah, session. so I can. हिंदी में भी लिखे हैं काफी कुछ बहुत अच्छे मैम, तो इट इज रियली वेरी इंस्पिरेशनल। पर मेरे ख्याल से कोई भी संस्था जब आप इस तरह के एनजीओ रन करते हैं तो यू माइट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज while starting and while running also. So what Yeah, yeah. difficulties you have faced during introducing Jwala as well as while running Jwala? So as I said, Arpita ma'am, the first day the bag वाला जो किस्सा था, पहले तो सेल्फ डिफेंस पे आ जाती हूँ। तो सेल्फ डिफेंस जब हम सिखाने लगे तो वो चार्ज नहीं लेते थे, और जब चार्ज नहीं लेते थे तो हमको लगा कि हमारी इज्जत भी नहीं हो रही यार, हम पैसे नहीं ले रहे तो हमारी कोई इज्जत भी नहीं कर रहा है। आजकल जमाना भी बड़ा अजीब हो गया है, बिकॉज आप अगर बड़े हाई फाई चार्ज करेंगे तो लोग सोचेंगे कि आप बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। Whereas it was not a taekwondo and judo or whatever, it was a technique that we all decided and we all formed. We are not teaching you about pepper spray, we are not teaching you about कि इस ऐप को डाउनलोड करो और इस ऐप में से कर देना। हम आपको कंबैटिंग सिखा रहे हैं, हम आपको काउंसलिंग सिखा रहे हैं, हम आपको टेक्निक्स के साथ सिखा रहे हैं कि आप अपना पोटेंशियल वेपन, आपका अगर एक बैग है, आपका दुपट्टा है, आपके हाथ में एक पेन है, आपका मोबाइल है, तो वो आपका पोटेंशियल वेपन कैसे है। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को सिखाते हैं हम, जूडो कराटे नहीं सिखाते। तो इन सारी टेक्निक्स को डेवलप करने में भी टाइम लगा। हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको भी तैयार करने में टाइम लगा। आप एक सेशन ले रहे होते हो और दूसरा सेशन कमिटेड होता है और तीसरे पता चला कि जी आपके जो इंस्ट्रक्टर है उसने आपका काम छोड़ दिया, उसने बोला कि नहीं मैडम मैं तो अब नहीं आपके साथ काम कर पाऊंगा। सो देन आई हैव टू से कि अच्छा ठीक है, आप तो पैसे ले लो, मैं मुफ्ती में काम करने को तैयार हूँ, पर आपको तो पैसे मुझे देने पड़ेंगे। पर ये पैसे कहाँ से आएंगे, मेरी जेब में से आएंगे, क्योंकि पैसे तो कोई देने को तैयार नहीं होता। द डे आई वुड से कि नहीं मैडम हमारे को थोड़ा हमारा सेशन का आप कुछ चार्ज दे दीजिएगा। अरे आप फ्री नहीं करेंगी, थोड़ा फ्री कर दीजिए, हमारे पास तो पैसे नहीं है। अरे पैसे कैसे नहीं है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट लेके बैठे हुए हो, ऐसे कैसे पैसे नहीं है आपके पास। बट समहाउ that happens. So money I think is the crux of all troubles that has happened so far. And but again as I said, that's besides the point, the journey is still going on. But there are times when we are so low कि अगले दिन नहीं समझ में आता कि अगले महीने की सैलरी कैसे देंगे। और फिर कोई एक भगवान जी देवदूत बन के चला आता है, वो बोलता है कि अच्छा मैडम ये ऑर्डर था तो इसमें कर लीजिएगा। So somehow the other things are going on, but we're looking for one particular kind of an organization where we do not have to look back for work. तो हमारा काम चलता रहे, सैलरी मिलती रहे, कोई और इसमें से सैलरी नहीं लेता है। नो अदर एग्जीक्यूटिव पर्सन टेक सैलरी एक्सेप्ट फॉर दिस स्टाफ जो है हमारा, और जो महिला रिन्यूमरेशन लेती है वो बनाने का, विच इज ऑल्सो आई हैवंट टोल्ड यू दैट हम वो जर्नी जो पेपर बैग की जर्नी थी, अब एक वाइल्ड गेस कर सकती हो कि हम कितने पेपर बैग्स बनाते होंगे। somebody can have a wild guess how many paper bags must be making? 5,000 approx. How much? 5,000 approx. Wow. It's See, one of the participants also said 10,000, 5,000. Okay. So just to inform you, we're making more than 1 lakh. Oh, wonderful. Okay. So it is that these bags are being sold not only now in Indore, but they are going to Bombay, they're going to Delhi, they're going to Hyderabad, they're going to Nagpur, and wherever people come across, they ask us. Can I show us? Yeah, I can show you. Just a sec. Just a sec. Can I just leave the screen for a moment? Sure. Okay. सारे sizes दिखा दो बेटा। This is a small size. We can have a different size. So we are customizing also. So now we're making paper bags from the price of 3 rupees to about 16 rupees. Okay. So and, how do you manage this paper outsourcing? Means from where you collect oh yeah papers? So at tiranga wala
So at one point of time, it so happened that I used to be taking raddi from everybody. You know, please मुझे raddi donate कर दो, please मुझे raddi donate कर दो. You can imagine what kind of people are. I mean, how people, what is their mentality. I'm a gynecologist by profession, so I know that I'm a pretty educated woman. In the best of the societies, people would call me कि वो रद्दी वाली बाई आ गई. My God. So there are people who actually, you know, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हड्डी बिना हड्डी की जबान होती है. वो जब मर्जी जहाँ मर्जी आप यूज कर सकते हो, उसका कोई उसका सानी नहीं है. So और लोग भी इतने मजेदार होते हैं कि रद्दी देते समय अपने घर की हल्दी लगी हुई, गंदे लगी हुई, आटे लगी हुई रद्दी भी हम तक पहुंचा देते थे. So I said that no, sorry, this will not do. Finally, because of course the so-called when the thing flourished, तो हमको अब पेपर लेना पड़ता है. तो अब हम प्रिंटेड पेपर हम जो इनके स्टॉकिस्ट होते हैं, उन स्टॉकिस्ट से अब हमको खरीदना पड़ता है. So that's another now investment that we have to do. तो वो भी एक अलग एक expense हमारे पास create हो गया है. Just if you allow me, आज की creation आपको बता दूं. Oh, wonderful. This is a mask. Oh, हाँ, it is wonderful. और आज तिरंगा दिवस है. और आज तिरंगे दिवस के लिए और 15 अगस्त की तैयारी के लिए ये वाले मास्क हमारे पास तैयार हो गए. That's wonderful. This pattern and this pattern. Very nice. हाँ, वैसे अब गवर्नमेंट ने भी ना बोल दिया कि N95 मार्क्स जो है they are not. N95 मैं पहले दिन से बोलती थी, कोई सुनता नहीं था. तब अगेन सब मुझे पागल बोलते थे. पर ठीक है, no problem. Thank you everybody. Yeah. I can see everybody's remarks coming up, so thank you so much. मैम ये जैसे आप परचेज करते हैं और इन लोगों की सैलरीज भी देना रहती है, तो फंडिंग में भी बहुत है. कहीं से नहीं है अर्पिता, कहीं से फंडिंग नहीं है. Not one penny. मैम जैसे though we have ATG and we have, you know, CSR में हम we are into that category where we could have a CSR contribution anywhere anytime. But honestly I'm not a person जिसके पास बहुत कंप्यूटर विज नहीं हूँ. मुझे बहुत ज्यादा टाइपिंग करके किसी को सब करना नहीं आता है. टीम है, धीरे धीरे टीम डेवलप होती है. So I am also looking for people जो मुझसे बहुत जो भी आता है वो सबसे पहले बोलते हैं मेरा पैसा कितना. तो डॉग कैचेस इट्स ओन टेल. आई एम जस्ट मूविंग अराउंड हियर एंड देयर कि मेरे पास पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, पर यार कोई तो पैसा दे दो. यू नो दैट वे. और मुझे पैसा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, नॉट एट ऑल. वी आर वेरी हैप्पी एक्चुअली. अगर हमको काम मिलता रहेगा तो वी आर वेरी हैप्पी. सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ पैसा वी लुकिंग फॉर वर्क. सो आप अगर कोई भी जना हमको कंसिस्टेंटली एक कोई वर्क भी देता रहेगा, so the center will go on because the girls are absolutely dedicated and committed to whatever they are working. I invite everybody anytime to come and meet these girls. Such happy faces, such wonderfully happy faces. So my request, humble request to everybody to please come and visit the center sometime. We will definitely going to, you know, visit very soon. We are going to visit your center, ma'am. Sure. Most welcome. जो ज्वाला हमारे आपकी जो एनजीओ है, इज इट रजिस्टर्ड एनजीओ और या इट इज रजिस्टर्ड. ओके. सरकारी पेपर, सरकारी कामकाज जितना जो हो सकता है वो सब कुछ पेपर हमारे पास है. इसलिए कि हमको कोई गलत काम नहीं. हमारे पास एक अगरबत्ती का भी हिसाब है. तो आप गवर्नमेंट से अप्लाई नहीं करती हैं फंडिंग के लिए? देखो अर्पिता, प्रॉब्लम क्या थी मैंने वही आपको बताई. प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्या होता है आप सरकार के पास जाते, यू नो हाउ द मशीनरी वर्क्स. इफ दे सपोज टेल मी कि अच्छा मैडम आज यहाँ बैठिए, वहां बेंच पे बैठे रहेंगे और फिर उसके बाद बोलेंगे कि अच्छा फिर आना, आज पूरा 2 दिन तक बाबूजी अंदर बैठे हुए और फिर वो बाहर आएंगे, तो वो मुझे कभी कभी ऑकवर्ड लगने लग जाता है और फिर मैं वो नहीं कर पाती हूँ. और वो मेरी शायद वीकनेस होगी और शायद गलती भी होगी. फिर वो मुझसे किकबैक कभी मांग सकते हैं, कभी नहीं मांग सकते हैं. वो भी उनकी प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है. कभी कभी उनको मेरे को देख के डर लग जाता होगा कि भाई इससे कैसे मांगेंगे, तो वो भी एक समस्या, इसलिए वो पैसा नहीं देते. तीसरी समस्या ये हो जाती है कि अगर कोई व्यक्ति को एम्प्लॉय करूं भी कि आप मेरे को ला दो और मुझे उस 3 महीने तक वो नहीं लेकर आ पाया, तो मैं उसकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी. क्योंकि वो मेरे से आप विश्वास करेंगे, आई इन्वेस्टेड फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल प्रोडक्ट्स. देयर आर
150 products that we have made in Jwala so far. But हम Amazon पे रजिस्टर करें, हमने Amazon पे रजिस्टर करा, उनका एक सहेली प्रोग्राम है, उस पर मैंने रजिस्टर करा. उसके लिए रजिस्टर होने के लिए जीएसटी का नंबर लेना कंपलसरी है, बिकॉज एनी ऑनलाइन मार्केटिंग रिक्वायर्स जीएसटी नंबर. अब वो मुझे उसका तंत्र नहीं मालूम कि क्या गड़बड़ करी मैंने या क्या हुआ, पर मैंने अपनी सच्चाई से जीएसटी का नंबर लिया और उसमें 20,000 रुपए महीने का मुझे जीएसटी का देना पड़ा, पैसा देना पड़ा. 20,000 की तो सेल नहीं हुई. एक अमेजोन का ऑर्डर आया 500 रुपए के बैग का. तो मैं 3 महीने जीएसटी का बिल देते देते तो मैं गंजी हो गई. तो आई सेड नो वे, बाहर निकलो भाई, अमेजोन से ना बिके चलेगा, पर कम से कम आई कांट अफोर्ड ऑल दिस. सो यू नो स्मॉल लिटिल थिंग्स वो घूम फिर के वहीं आके खड़ी हो जाती है. छोटी छोटी समस्याएं हैं, कोई बात नहीं, चलेगा. स्ट्रगल इज ऑन, बट वी आर हैप्पी. एंड यू मींस आपके साथ रहकर कोई डीमोटिवेट हो भी नहीं सकता है मैडम. आपका ऑरा ही ऐसा है कि कोई डीमोटिवेट मेरे ख्याल से नहीं हो पाता होगा आपके आसपास भी. थैंक यू अर्पिता, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू. I'm just happy I'm getting connected to so many beautiful people. I'm so happy about that. Just that. Ma'am, we will definitely, people are asking your contact number. So with your Sure. permission, I will share the contact Please. number, those who are willing. I'll be more than happy to answer anybody. Sure. अभी मैम जैसे आप ज्वाला का फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपने कुछ सोचा है क्या? कुछ एक्सपेंशन करना चाहती हैं या क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? Oh God. I always quote John Stuart Mill, एक कवि थे जिनकी कविता है Woods are lovely, dark and deep, and I have miles to go before I sleep. इतनी सारी चीजें. आप विश्वास करोगे, अभी बिकॉज एनजीओ रजिस्टर्ड है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, अभी इन दिनों भी और हमेशा ही I get calls at 2 o'clock in the middle of the night. I get calls at any random hours. मैम मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं बीच सड़क पे खड़ी हूँ, क्या कोई जगह है जहाँ पे आप मुझे रख सकती हैं? मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है मेरी गोद में. आप विश्वास करेंगी कैसी कैसी समस्याएं हैं जो होती हैं समाज में, सोसाइटी में. मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत मार दिया है, मैं लाल पीली हो गई हूँ. एक लड़की का फोन आता है कि मैं किसी क्लब में गई थी, वहां उस लड़के ने मुझे कुछ पिला दिया और गाड़ी से फेंक दिया बाहर. So a girl was found on the middle of the road, and then one of my persons who called up कि मैम आप प्लीज इसको उठा के ले जाइए यहाँ से. मेरे पास अभी तो कोई जगह नहीं है रखने की, लेकिन एक सपना है कि कभी एक बार एक कुछ हॉस्टल भी रखें जहाँ पे इस तरह की लड़कियों को हम रख सके, कम से कम एम्पावर कर सके. ट्रेनिंग चाहे वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो, मैं परमानेंट हॉस्टल रखने के मूड में भी नहीं हूँ, लेकिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो, कम से कम वो आए 15-20 दिन, 1 महीना, जब तक उनको वो सहारा नहीं मिल जाता वो सहारे के लिए आए, और फिर उसके बाद जब वो एक बार अपने पैर जमीन पर टिका ले, जॉब पता कर ले उनको, तो फिर वो वापस चली जाए जहां भी वो जाना चाहती हूँ. बिकॉज यू नो हॉस्टल्स आर ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक दीज डेज, सो आई डोंट वांट एनी हॉस्टल समस्या ऑल्सो. कल को वो सिर में कोई और चला आए और वो कुछ और तमाशे शुरू हो जाए, सो डोंट वांट दैट. सो बट एनीवे, as I said, lots and lots of things to do, and very soon, I'm just declaring it to you, very soon probably we'll be starting a all Jwala portal. Oh, So wonderful. let's see. Yeah. Wonderful, ma'am. Let's see. Yeah. मैं तो आपकी बातें सुनकर जो है मैं सवाल भी भूलती जा रही हूँ कि मैं क्या आगे अगला सवाल पूछूं. Please go ahead. आप वैसे ये बैग्स बनाती हैं और जो जैसे मास्क दिखाया, इसके अलावा आपने बोला कि आप 150 प्रोडक्ट्स आपके हैं और 100-150 प्रोडक्ट्स. हाँ, so I think the website has everything. So I think मेरी वेबसाइट बहुत स्मार्ट वेबसाइट शायद नहीं होगी, पर फिर भी प्लीज आप लोग जाइए जरूर. और jwala.org.in, that's the website. So in any case, suppose anybody also wants to have मतलब उसके improvisation के लिए मुझे कोई एडवाइस देनी हो तो प्लीज उसमें भी दे सकते हैं. So please go ahead, jwala.org.in, that's the website. उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स एनलिस्टेड हैं, वहां से भी आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि अमेजोन पर नहीं दे सकते हो कि तुम वहां तो दे ही सकते हैं. जी. अभी जैसे हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो आपका मैम व्यू जानना चाहूंगी कि आपके व्यू में, आपके पर्सपेक्टिव में अभी महिला सशक्तिकरण पर क्या परिदृश्य है? See, I'm shivering, that's why I'm No. अर्पिता, मेरी एक जोश टॉक हुई थी. वो जोश टॉक वाज ऑन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट,
and I would like to touch that subject here again because we have a wonderful audience here. So I'm starting a movement very soon. Hashtag MCBC. The very idea is कि जितनी मेल कम्युनिटी है बिना सोचे समझे ये दो वर्ड्स को यूज करती रहती है, और अब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोज एक ना एक सीरियल देखते हैं रात को, चाहे वो पाताल लोक हो, चाहे सेक्रेड गेम्स था, चाहे कोई भी था. एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड हाउ फ्रीक्वेंटली दीज टू वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड. और ये दो वर्ड्स अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो ये क्या वर्ड्स हैं. इससे खराब चीज एक आदमी किसी दूसरे आदमी और उसके से रिलेटेड महिला के लिए नहीं बोल सकता है. अगर वो अपनी माँ की इज्जत करता है तो वो ये वर्ड नहीं यूज कर सकता किसी दूसरे की माँ के लिए, और इससे घिनौना कोई काम नहीं हो सकता अगर वो ये शब्दों का प्रयोग कर रहा है. हमको अब एक ही मूवमेंट चलाना पड़ेगा कि अब भगवान के लिए ये दो चीजें बंद करो. अगर ये दो चीजें बंद कर दोगे तो तुम उन दो औरतों की इज्जत करना शुरू कर दोगे, और जिस दिन इज्जत करना शुरू कर दोगे उस दिन समाज में परिवर्तन और बदलाव आना शुरू हो जाएगा. The day I was talking to my husband and the day I was talking to somebody in the, my husband also said, यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. कितनी फ्रीक्वेंटली सब लोग बैठ के गालियां दे देते. I said, मैं आज कसम खाता हूँ कि आज के बाद तो कभी नहीं करेंगे. मैं जो कोई बोल रहा होगा उसके मुंह पे बोलूंगा कि भाई ये नहीं करना है. So हम अगर एक दूसरे के साथ बैठ के अगर इस छोटी सी चीज का शुरुआत कर सकते हैं, बहुत छोटी चीज है बट प्रॉब्ली उसके पीछे की सोच बहुत घिनौनी है, बहुत गंदी है. और अगर उस सोच को हम बदलाव लाना आज हम सब एजुकेटेड सोसाइटी अगर शुरू कर सकते हैं तो प्रॉब्ली विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट अ होल न्यू चेंज इन द सोसाइटी. So let's start something which is very simple, which is very doable. Nothing great is required, but at least we can start telling people that stop doing it. So I think that's a very doable gesture that we should begin with. So let's start with hashtag no MCBC. Very wonderful, ma'am. It was. We have never thought like this. Means क्योंकि हम लोग तो इतने ज़्यादा आजकल pandemic period में भी इतने OTT platforms पे इतनी films देखते हैं. OTT platform is gone like I don't know, हर खत्म ही नहीं होता वो word. जब देखो तो I think it has become in fact even all, if I see stand-up comedians भी जितने हैं आजकल, जितने वो लोग भी यूज करते हैं, जितना वो लोग ये वर्ड यूज करेंगे उतने लोग हा 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 करके हंसते हैं और तालियां बजाते हैं. So what is this going on? And ये जो सब stand-up comedians हैं, they are all from IIT, IIMs बन के drop करने के बाद ये वाला उन्होंने profession use करा है. So I think they need to like really stand up and say that I'm not going to use this F word in Hindi especially. और हम क्यों नहीं bring करें ये सब changes? That is amazing, ma'am. The way you are thinking and the way you are, starting these new thing hashtag. छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत important है. और ये बहुत जो लोग frequently user है, those who use frequently abusing word, it becomes very difficult for them to survive without those words. Exactly. So we have to like, as it आपने किसी को भी सुना तो तुरंत उसको बोलिए, रोकिए कि क्या तुम ऐसा कभी चाहोगे कि तुम्हारे माँ के साथ ऐसा कभी हो? Perfect. So then why use this term? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है मैम. और स्पेशली मैंने देखा है जो मिलेनियल्स हैं, they feel honored to use those words. हाँ, मतलब as if it's like nothing, कुछ भी नहीं बोला मैंने. बड़े कॉमन सा एक यूजिंग टर्म्स एक हो गई है, लेकिन उसके पीछे की भावना बहुत खराब है, उसको बदलना होगा. जी. Any questions from the panelists, from anybody? Are we still on, or the session is about to get over? No, ma'am. We have 15 minutes more. Okay. So anybody wants to ask anything else? Ma'am, questions they are asking for the what you can say contact number and NGO, and they will help you in different way. Sure. लेकिन मेरे पास एक और क्वेश्चन है मैम आपके लिए कि जी प्लीज. अभी स्टार्टअप का युग है, ये है ना, सब लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप इसी ज्वाला के साथ कुछ ऐसा स्टार्टअप या जो एनजीओज
की तरफ मुड़ना चाहते हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में भी दे हैव टू प्लान फॉर द स्टार्टअप्स? I think this is one field, NGO field, which has been very widely abused. Why? Because so far the NGOs have been used as a media or a medium to, I'm so sorry to say, black का पैसा white करने के लिए, या अपने political जितने हैं angles उनको ठीक करने के लिए, या कुछ सिर्फ एक फसाड फ्रंट फेस बनाने के लिए. कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं. और CSR एक्टिविटी गवर्नमेंट ने स्टार्ट ही इसीलिए करी थी कि एनजीओज को के साथ कनेक्ट करके अच्छा काम होता है. मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. अगर सचमुच हमारे एनजीओज काम कर रहे होते, जो कि पिछले सरकारों से और समय से चले आ रहे हैं, तो अब तक की हमारी पॉवर्टी, एजुकेशन, ये सब अबॉलिश हो चुकी होती, क्योंकि इतना पैसा दिया जा रहा था. ना तो हेल्थ इंप्रूव हुई, ना एजुकेशन इंप्रूव हुई. हम अभी भी वैसे के वैसे ही हैं और सरकार की तरफ ही हमेशा मुंह देखे जा रहे हैं काम करने के लिए. तो गलती कौन कर रहा है और कहाँ कर रहा है, इसके बारे में भी सोचना और विचार करना बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है. सो वी हैव टू नाउ ऑल्सो इनकलकेट द आइडिया ऑफ हाउ एग्जैक्टली आर योर, आप अपने आप को कहाँ आकलन करते हैं, आप कितने अवेयर हैं कि आप कितनी ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे हैं. आप अगर ईमानदारी से अपना काम करने लगेंगे तो हो सकता है कि हमारे को एनजीओ की जरूरत ही ना पड़े. पर एनजीओ से काम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि जहां तक शायद सरकार ना जा पाती हो वहां पर एनजीओ काम करे. पर वो दोनों ही काम नहीं कर रहे, ना सरकार काम कर रही है ना एनजीओ काम कर रहा है. तो समस्या वहीं की वहीं खड़ी हुई है. तो कम से कम हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो ऑनेस्टी से कुछ सचमुच सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं. Then only we will see a new era and a new change and a new India. What? My question to anybody who comes to intern with us is, somebody is asking, kindly show the paper bag again. I request the participant to visit the website also, and you can shop something from Shima. You will definitely get it. I have many bags. Somebody called up and asked me कि मैम मेरे पास इतने बैग्स इकट्ठे हो गए कि कोई बाय बैग स्कीम है क्या आपके पास? I don't have any buy back scheme. मैम एक क्वेश्चन हमारे पास ईमेल पे आया था. क्या? प्रोफेसर विजय गंभीर हैं, इन्होंने पूछा है कि जिस तरह से SHG मॉडल जो है, SHG looks towards the government and foreign agencies for their financial aid. Why not they contribute themselves or try to get the private financer as in Bangladesh? सर उसके लिए कोई कमिटेड बंदा चाहिए ना. उसके लिए कोई कमिटेड बंदा चाहिए जो ये सारे के सारे काम करे, अप्रोच करे, मेल्स करे, मेल का आंसर करे. मेरी ऐसे समस्या, थोड़ी सी समस्या मेरी, I said मेरी एक समस्या है that I am not a very good computer wizard. मेरे से बहुत ज्यादा फटाफट मेल्स नहीं होती हैं. मैं बहुत ज्यादा इस काम में नहीं एक्सपर्ट हो पाती कि मेरी बड़ी अच्छी लैंग्वेज लिख के मैं मेल कर सकूं और वो कर सकूं. तो उसमें मेरी बहुत बड़ी एक पिटफॉल है, एंड प्रॉब्ली आई सफर बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. मेरे से बहुत छोटे छोटे एनजीओ बहुत आगे आगे चले गए, बहुत बड़े बड़ी जगह पहुंच गए. I see Ruhi Sultana, she's from JNK. Yes. Oh, wonderful. I'm so happy. I've been trying to reach people in Jammu and Kashmir to start this kind of a program. Of course, Arpita, I would also like to tell you one more thing. We are ready to, kind of bifurcate and spread out in different states and different cities as well. So in case there are people who would want to be a part of Jwala, their initiative, it would be wonderful. How would you solve a problem of husband who comes to you for fighting? What was the question? In fact, ma'am, we have the participants from foreign too, means foreign countries. Okay. We have the participants, and we have participants from all, from Jammu Kashmir to Kanyakumari aisa. So wonderful. I would love to have Jwala everywhere. So this is the other dream that I nourish and I want to garnish, and I want to just go ahead. That we should have Jwalas everywhere. Let this be a revolution. Let this be a brand that goes anywhere and everywhere, because each woman is a Jwala in herself.
and that the fire within that has become small, it has become taken a backstage, और वो कहीं छुप के दब के दबा दी गई है, दब के रह गई है, पर वो है तो सही, उसको सिर्फ थोड़ा सा निखारना बाकी है, वरना हर वुमेन के अंदर ज्वाला है, क्योंकि जब कोई माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए शेरनी बन जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो ज्वाला है। इसलिए उसको सिर्फ उसको मुझे जामवंत का काम करना है कि मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुमको सिर्फ आगे बढ़ना है। So that is all I need to do. My last line, as I would want to say, Arpita, yes, is that when anybody comes to work with any organization, NGO, I just say that please understand that the NGO is benefited by your presence, but also understand that you as a person should be benefited and your personality should grow when you work with an NGO. Because आप जब इन महिलाओं, इन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तब आपको जीवन की इतनी सच्चाइयों के बारे में पता चलता है। मैं आपको एक छोटा सा अगेन एग्जांपल देती हूँ, सॉरी, आई होप आई हैव टाइम। When I was when I was taking self-defense sessions, so in my self-defense session I take a lot of counseling session also. It's a huge 1 hour, 1.5 hour counseling. And when I always quote that there is a NCRB data that says that stay away from your relatives and your friends of relatives and things like that, people who are known to you, because NCRB says, National Crime Report Bureau, it says that about 90 to 92% of the girls who are being molested because of people who are known to them. They could be their relatives, first nearest relatives, or even friends. Once I was taking this session in a college in Delhi, मैं ये पूरा, और 1000 की ऑडियंस, लड़के लड़कियां सब बैठे हुए थे उस पूरी ऑडियंस में. And once I said all this, there was a girl who raised her hand and she says, "Ma'am, आपने ये सब जब बोला है, तो मुझे मेरे को कुछ शेयर करना है." I said, "Go ahead, please." Because जब तक अभी पेंडेमिक नहीं था, तब तक I've been traveling all over and I give lectures, self defense और counseling, और इन सब के lectures के लिए मैं invite होती रही और मैं जाती रही. So I said, "Go ahead, tell me." So she says, "Ma'am, मैं क्या यहाँ सबके सामने शेयर कर सकती हूँ? मैं सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ." I said, "Okay." So she says कि मैम मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे जब से मैं 7 साल की थी, तब से मुझे मेरे चाचा ने मोलेस्ट करा है. Now in front of 1000 people, लड़के लड़कियां, this girl got the courage to share that. जब हम उससे सारा बात करने लगे, उससे हमने बात करी. Initially she was very brave, then she broke down, and when she broke down, there was a pin drop silence in the entire auditorium. और मैंने तब लड़कों से पूछा, मैंने कहा अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमको आज कैसा लग रहा है? So they said, मैम मन कर रहा है कि हम उस आदमी को जाके मार डालें. I said, आज से लेसन ये सीखना है, इतने सारे जितने लड़के बैठे हैं, कि अब वो चाचा नहीं बनना कभी जीवन में. Said, मैम हाँ बिल्कुल नहीं. And you will be surprised to know, Arpita, after the session got over, I had 15 girls coming. Ma'am, your audio is mute. Yeah, I had 15 girls in that audience who came to me, telling me कि मैम मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, और मैं भी इसकी बुर रही हूँ, और मैं पर लेकिन आज दिन तक कभी हिम्मत नहीं करी मैंने बताने की. 1000 की ऑडियंस में 15 लड़कियां बाहर निकल गई. हो सकता है और भी होंगी, वो 15 लेकिन आई बाहर. So I don't know आप किस स्ट्रीम से कहाँ किसको कैसे टच कर जाते हो और उसकी लाइफ में कैसा वो चेंज आ सकता है. लेकिन एक एनजीओ के साथ करने से, जो ऑनेस्टली काम करने में लगा हुआ है, उसके साथ काम करने से शायद आपके जीवन में जब तक बदलाव नहीं आता हो, तब तक एनजीओ में काम करने का कोई अर्थ नहीं होता है. Very true, ma'am. And it is very शॉकिंग. वैसे ये बहुत सारे रिसर्चर ने भी रिसर्च किया है कि इस तरह की जो मोलेस्टेशन है वो घर पे ज्यादा किए जाते हैं. और मेरे पास रोज आती हैं ये लड़कियां. मेरा भी स्टूडेंट से काफी इंटरेक्शन रहा है, क्योंकि इससे पहले आई वाज टोटली इनटू टीचिंग, तो वहां पर भी कुछ एक लड़कियां जो है वो पर्सनली आकर बताती थी कि मैडम इस तरह से बताती थी. बिल्कुल. तो पर इसका मैडम रास्ता क्या है? हाउ टू स्टॉप इट?
So when I say all this, when जब हम ये sessions लेते हैं तो सब यही बात करते हैं that you have to like rise up, and your best friend is your mother, because you have to first go and talk to your mother, be very frank. फिर उनको ways and means बताते हैं कि किस तरह से उस समस्या से deal करना है, how to deal with this person, how to deal with the family, how to deal with all this problem. So there's a series of things, and then we on our panel we also have psychologists. अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर हम साइकोलॉजिस्ट को ड्रॉप इन करते हैं, फिर उनके साथ उनके सेशंस कराते हैं, सो दैट यू नो दे कैन कम आउट ऑफ इट, फाइट इट आउट, because these girls probably who have been tormented for years will have a bad married life maybe later on, because probably वो उस तरह से अपने आप को देखेंगे नहीं, अंदर दबी घुटी रहेंगी वगैरह वगैरह. So all those things, so then they have to go through those sessions which is of course free of charge. तो ये लोग इन लड़कियों को हम फिर पैनलिस्ट के साथ भेजते हैं, फिर वो लोग अपने काउंसलिंग सेशंस लेते हैं उनके साथ. That is really very That's about it. disappointing है मैम, बहुत ज़्यादा. Oh my, very sad story. Yes. नीरज वर्मा जी ने एक लीग से हटकर क्वेश्चन पूछा मैम, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट्स योर मैसेज फॉर ऑल दोज women who misuse their right to abolish the image of any Sorry. Once again, sorry, there was a phone what's your message for all those women who misuse their right to abolish the image of any eminent or prominent personalities, like we saw in #MeToo case? I am the only woman probably, I am openly declaring it, I'm the only woman probably who is against Me Too movement, and I openly declare it, because मैं आज 6 साल बाद मुझे याद आया है कि मैं किसी बंदे को मीटू करके और अब मैं बदनाम करूं. सॉरी, जब तुम्हारे को एडवांटेज लेना था तब तुमने एडवांटेज लिया, जब तुमको आगे आना था तब तुमने आगे आए, तब तुमने उस आदमी का भरपूर यूज करा. तुम्हारे पास दांत, नाखून, पैर, हाथ, मुक्का मारने की क्षमता तब भी थी, सैंडल तब भी था, तुम तब चाहती तो तब तुम उसका काट के, नोच के, मार के, सब करके आ सकती थी. And let me tell you one thing, a woman by the looks knows कि आदमी मुझे कैसे देख रहा है. So she has an antenna. उसके भगवान जी ने एंटेना लेके भेजा हुआ है, जब उसको समझ में आ जाता है कि मुझे आदमी किस लुक्स के साथ देख रहा है, और उसके बावजूद यदि वो नेग्लेक्ट करके आगे जाती है, तो आई थिंक उसने उस समय कॉम्प्रोमाइज किया था, इसलिए अब उसके पास हक नहीं है कि उसके बारे में वो बोले. So I think we need to, like, you know, make these girls understand and make the men also understand. यार, why only women understand? आदमी क्यों नहीं सीखेगा? वो कब सीखेगा? Why does he have to pull his pants down every time that he sees a woman? That is really very true, ma'am. And right now we have 141 participants with us, and those who are listening and giving you continuous feedback on this. And this session actually, because you know, I just want to listen you more and more. And oh God, you are really very inspiring and really very motivating. I hope मेरे ख्याल से जब हम पहली बार मिले थे तब मैं इतना नहीं जान पाई थी आपको, लेकिन I just, I can do this. Thank you so much for joining us. Please, don't embarrass me. Don't embarrass me. आप इधर नहीं तो मैं आपको current नहीं, please. Thank you so much. I'm just so happy you made me connected to such wonderful people. I'm so happy for that. So thank you so much. I'm indeed indebted to you. Yeah, thank you. Thank you so much, ma'am, once again for joining us and sharing your valuable experiences with us. And anytime. Now I request our group director, sir, Dr. Puneet Kumar Dwivedi, to propose word of thanks to ma'am. Thank you, ma'am. अब इतना तो सुनने के बाद से जब हम एक लौह महिला को सुन रहे हैं, जहाँ पे जिसने समाज को के पुनर्निर्माण के लिए महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है और अथक रूप से आगे बढ़ती जा रही हैं, अनेक चुनौतियों, अनेक बाधाओं के बाद भी अपने बूते पर महिला सशक्तिकरण का जो बीड़ा है उन्होंने उठाया है. और निश्चित ही अर्पिता मैम का जो करना है वो ठीक है, ऐसे महिला शक्ति को प्रणाम करना चाहिए. और महिला तो वैसे शक्ति होती है, और जब शक्ति कोई चीज स्टार्ट कर देती है तो फिर वो पूर्ण ही होता है.
जब हम दुर्गा के 3 रूपों की बात करते हैं, हम दुर्गा त्रिगुणात्मक की बात करते हैं, तो यह भारत का सौभाग्य है। भारत में महिला पहले से ही पूजनीय रही है, आगे भी रहेगी, और महिला पुरुष की तुलना नहीं है, महिला कहीं बहुत ऊपर है। और ये सब चीजें हम समाज में सबको पता भी है, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती गई, और कई ऐसी जो विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणालियां, जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली आई देश में, उसकी वजह से कई तरह के ऐसे बुरी चीजें भी, बुरी प्रथाएं भी हैं, बुरी माइंडसेट या मानसिकता भी देश में आई, जिसके चलते ही हमें देश की जो स्पीड थी वो स्लो पड़ गई थी। निश्चित ही धीरे चीजें सुधर रही हैं, और महिला पुनः अपने स्थान पे काबिज रहेगी, उसका स्थान बहुत उच्च है। और आपके जो प्रयास हैं वो निश्चित ही राष्ट्र को पुनः परम परम में तक पहुंचाएंगे, और हम आप साथी हैं। अब मुझे लगता है कि मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अब आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहेगा, और मैं निवेदन करूंगा कि अगर ये संभव हो सकता है तो हम मॉडर्न कैंपस में ज्वाला चैप्टर शुरू करना चाहेंगे, जिसमें हम महिला उद्यमिता, सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिला सशक्तिकरण के कई टॉक्स वगैरह, या जो भी रूरल बैकग्राउंड की महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने की जो आपकी योजना है, उसके तहत हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी योजना में ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो निश्चित ही हम ज्वाला चैप्टर शुरू करेंगे। Thank you so much, ma'am, for joining this wonderful webinar, and we are very much fortunate to have you here. And I think all the participants, they have enjoyed this session, and they must be benefited by this. I thank you on behalf of our chairman, Shri Anil Khariyaji, and vice chairman, Shri Shantanu Khariyaji, I Dr. Puneet Dwivedi from Modern Group of Institution, thanking you for accepting our invite to be as a panelist, be as a guest speaker in this national webinar series #Modern Talk. Thank you so much. Pleasure. Thank you so much. Pleasure. Once again, thank you so much, ma'am. On behalf of entire Modern family, I thank you. I thank all the participants, those who have joined us, those who have interacted. I'm told you can connect with ma'am anytime, and we have shared the link for the NGO to www.jwala.org.in. So please connect with ma'am, and जितने ज्यादा हाथ रहेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ज्वाइन होइए और महिलाओं को सशक्त करिए और उनको आगे बढ़ाइए। वंस अगेन, महिला सशक्त है, महिला सशक्त है। जी बिल्कुल, मैं अपने शब्दों महिलाओं को अपनी जान कहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन। प्लेजर, प्लेजर, वंस अगेन, थैंक यू सो मच। बाय।